Okay, so today we'll discuss the concept of module homomorphism. So we know that what is the concept of a ring homomorphism. So in the same way, we can define homomorphisms between modules. So okay. Okay. So let M and N be R modules. So here we are assuming that both M and N are modules over R. They are modules over the same ring R. So a map in the same way, like a map F from M to N is called a map from M to N is called an R module homomorphism. अब यहाँ पे भी homomorphism हम R module कहेंगे. If what is the number one condition? That f of x plus y. This is the first condition. It is equal to f of x plus f of y for all x y in M. And number two condition, which is about the linearity, that f of alpha x or f of rx, it is equal to r of f of x for all x in M and for all r in R. So this is the definition of a module R module homomorphism. So the first condition actually will preserve the abelian group structure of the module, and the second condition will preserve the scalar multiplication structure or the structure related to the scalar multiplication. So it is a generalization of a linear map. जैसे हमारे तभी इसको एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, इनको आर लीनियर मैप्स भी कहा जाता है. आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म को आर लीनियर मैप्स भी कहा जाता है. So जो linearity preserve हो गई. So this is the definition. So now we will see a few examples. आज तो तुम्हें बता दिया ना, आज तो धोखा नहीं दिया किसी ने. लेकिन सर अभी भी ग्रुप में 11:30 का किसी ने नहीं, मैंने कह दिया था मार्क, मैंने ग्रुप में कह दिया. अच्छा, मैं 10:45 लिखना चाह रहा हूँ, 11:45. नहीं, वो एक्चुअली वो 10:45 लिखना चाह रहा हूँ. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. अगेन एग्जाम्पल्स में if you are if our both modules are k vector spaces, so if M and N are k modules, that is M and N are vector space, both are vector space over K, then in this case actually a linear map, and a linear map is basically a module homomorphism because ये linear map की generalization. So in this case a linear map F from M to N is a K module homomorphism. So again हमने vector space के केस में देख लिया that all
in the case of vector space, all linear maps, so or any linear map from M to N is a K module homomorphism. Now, in the second example, so we know, so let G and H be G okay, अब G and H, अब ले लें G and H are abelian groups with respect to addition. So we know that, so they could be considered as a Z module. क्योंकि हमने last class में देखा that any abelian group could be considered, so they could be considered as a Z. बल्कि इसको इस तरह से लिख देते हैं, that is अब तो हमें मालूम है ना, that is G and H are Z modules. अब यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, now as an abelian group, whenever I will take, so as an abelian group, so let F from G to H is a group homomorphism. मैंने group homomorphism ले ली, is a group homomorphism. That is f of x plus y, it is equal to f of x plus f of y. Okay. Then one can, so condition one already hold kariye, because I am assuming that this is a group homomorphism. Now for the condition 2, you can check that if you multiply n with x, and this condition hold actually for all xy in M, sorry, in G. So for n in Z, अगर मैं f of nx लूंगा, तो f of nx में कैसे एक्ट होता है, वो x कितने टाइम सेट हो जाता है, n टाइम सेट हो जाता है. ओके, ऐसे एक्ट करता है ना कि whenever we will consider an abelian group as a C module, then an integer n on x act on x in this way. Now since this property holds, so I can write this thing f of x plus f of x n times. Okay, so this is equal to n dot f of x. So if we compare the left hand side with the right hand side, so what you will find that f dot n, it is equal to n dot f of x. That is the condition 2 will hold automatically. So what we prove that whenever I will take, whenever I will take a group homomorphism, so it will, so condition number 1 is holding automatically, and condition number 2 will also hold. So this group homomorphism is also a Z module homomorphism. From condition 1 and condition 2, we can imply that. So from 1 and 2, imply that f is a Z module homomorphism. F is a Z module homomorphism. So actually ये क्या imply करता है that ये क्या imply करता है, that is a module, that is a group homomorphism. A group homomorphism between abelian groups. तो अगर आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालना आ जाती है तो वही सारी Z मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होगी. A group homomorphism between abelian groups is also a Z module homomorphism. So for example, if we have a group homomorphism, जैसे हमने वाली एग्जांपल करी है
Z12 से Z30 में हमने कई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स निकाली थी. ओके, सो लेट्स से इसमें ये भी निकाली थी कि f of x is equal to 5x. ये हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकाली थी, अगर आपको याद हो. तो एक्चुअली दिस इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. सो इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. सो अगर इनको मैं अब z मॉड्यूल कंसिडर करूं, अगर इसको भी मैं z मॉड्यूल अब कंसिडर कर सकता हूं, इसको भी z मॉड्यूल कंसिडर कर सकता हूं. So now I can so f is also a z मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म. तो अब मैं इसको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो अब मैं इसको z मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म भी कंसिडर कर सकता हूँ. So between abelian groups which are basically z modules, a group homomorphism between abelian group is a z module homomorphism. So you can classify all z module homomorphism easily just by taking all group homomorphisms. Okay, next what we have. Third example. Okay, in this case, let f, okay, let m be an R module and A is a fixed element of M. Now define a map. एक मैप हम डिफाइन कराते हैं. Define a map FA from M to M in this way that whenever we have input x is an M, then output is equal to AX for all x in M. So now first we defined a map from M to M in this way that, and actually this map is defined with the help of an element A of M, that if input x is an element of M, sorry, A is an is a fixed element of R. It should be a fixed element of R. It should be a fixed element of R. A is a fixed element of R. So for a fixed element A of R, we define a map in this way that if input is x, then output is equal to AX. So again, we can say that output is also an element of M because x is an element of M. So if we multiply x with A, which is an element of R, so again we will get an element in M. So what is the claim that this f of A is a R module homomorphism. So one can check it easily because if for condition number 1 that for xy in A and M, so f of A x plus y, it is equal to f of AX. So it is, by definition, it is equal to A times x plus y, and it is equal to AX plus AY, and this is equal to f of AX plus f of AY. And the condition number 2 that for R in R and X in M, if we multiply f of A into Rx, so by definition into A into Rx. So now using the module property, I can write this thing in first in this form AR into X. ये module की property होती है that associativity hold करती है between the scalars and an element of M. And then since R is a commutative ring, so this is equal to RA
into X. So again, using the property of a module, it could be written R into AX, and it is equal to R into f of AX. So now it shows the second property, that image of Rx is equal to R times image of X. So it shows that, so 1 and 2 implies that, so 1 and 2 implies that f of A is an R module homomorphism. So actually, this is an important homomorphism, because now what we have seen, that by taking any element of R, so we are getting by taking any element of R, we are getting a map from an R module homomorphism from M to N. इसका मतलब मैं एज डिफरेंट एज लेता रहूंगा तो मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे डिफरेंट homomorphisms अवेलेबल होंगे. बट वी विल सी कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दो डिफरेंट ए हो मगर वो होमोमॉर्फिज्म एक ही एंटिटी का हो. तो जब हम मैथ्स को भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. Okay, now one more example which I want to discuss in detail. Okay, we know that let's say R is a so let R be a ring. Okay, so we know that R, this is, we can consider R as a module itself, and also we can consider R as a module itself. Now let's say, actually I want to classify all R module home or module homomorphisms from R to R, or basically I want to classify, so classification of R module homomorphisms from R to R. So let's say let F, so यहाँ पे मैंने assume कर लिया, let F be an R module homomorphism from R to R. तो क्या इसको यहाँ से इस तरह से लिखने के, let F from R to R be an R module homomorphism. तो मैंने कोई भी एक R module homomorphism ले ली from R to R. Now R is a commutative ring. We know that R is a commutative ring with unity. So जैसी इधर ऊपर है ये वाली, अच्छा ये होम, ये थैंक यू. Okay, so since we know that तो हम इसको क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, so that's why, so since one is an element of R, so f of one का भी कोई ना कोई इमेज होगा, because one is an element of R, so assume that f of one, it is equal to A. Okay, now if the image of one, it is equal to A, so for X in R, what do you think, what is the image of X? हम image of X कैसे निकाल सकते हैं? So why it is equal to AX? Yes.
So actually this is equal to x dot 1, x dot 1, x could be written as equal to x dot 1. And now since we are assuming that f is an R module homomorphism, तो हम x को स्केलर की तरह ट्रीट करके इसको हम it could be written in this way, and it is equal to ax or xa, or it is equal to ax. So what we prove that that if image of f of a it is equal to 1, then we prove that image of any element x it is equal to ax, and it is a map which could be defined in this way, जो हमने पहले भी ऊपर देखा था सिर्फ आम मॉड्यूल्स के लिए इसको, it is, and this map is defined in this way. So class, what is the point that so why this is a classification problem? Because what is the point that whenever we have a map R module homomorphism from R to R, then actually this f is induced by some a, then f is induced by an element a of R, that is f किसके इक्वल हो जाएगा, हमेशा किसी f के इक्वल होगा. तो f is into that. In this way we can classify or R module homomorphism, that whenever we have an R module homomorphism from R to R, it is always in this form. An R module homomorphism from R to R, it is always in the form of f of a. It is always induced by some element a, such that f is equal to f of a, and where f of a किस तरह से define है, that f of a में जब कोई element input करते हैं तो it will give me output ax. So so we can assume that R module homomorphism from R to R is in the form of fa, where a is an element of R. वो हमेशा इस फॉर्म में होगी, f of a की फॉर्म में होगी. Or in particular we can say that is set of, or agar if I'm assuming or R, if I'm considering or R on module homomorphism from R to R, that is set of all R module homomorphisms, it is in this form. क्योंकि हर R module homomorphism f of a की form में ना, where a is an element of R. So actually in this way, that's why we classified all R module homomorphism. So they are always in the form of f of a. तो अगर मैं एक सेट ले लूं जिसमें तमाम R और module homomorphism ले लूं from R to R, तो वो सेट के एलिमेंट्स किस फॉर्म में दिख रहे होंगे? It contain elements which are in the form of f of a, where a is an element of R. तो इसमें वो तमाम maps include हो जाएंगे which are inducing by different elements of R. क्योंकि जो भी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होगी वो हमेशा इसी फॉर्म में होगी. Okay, in the same way, I want to classify all R module homomorphism from R to M. Okay, so let M be an R module, and suppose F from R to M, that F from R to M be an R module
homomorphism, be an R module homomorphism. So again, I want to classify I want to classify all R module homomorphism from R to M. So इसमें भी logic वही होगी कि let if the image of one, so if the image of one it is equal to A, okay, if the image of one it is equal to A, then what we can say then for X, up now for X in M, what you can say about the image of X? X in R नहीं होगा? Sorry? X in R होगा ना? No. X and R, sorry, X R में होगा. X R में होगा. Again, X is an element of R because input तो है ना. For X is an element of R. So again, this thing it is equal to X dot 1. We can take X. So point ये है कि इसको भी and this is equal to AX. So point ये है that this could also be written in the form of f of AX. So in the same way, we can also classify all R module homomorphism from R to M. जैसे जितनी भी R module from R to R थी, they are in the form of f of A. So all R module homomorphism from R to M, they are also in the form of f of A, because I started with an arbitrary R module homomorphism and I proved that it is in the form of f of A because it is inducing by A. So again, we can point that the set of all R module homomorphisms from R to M, because here in this module homomorphism, I am assuming that this R is an R module and M is also an R module. From R to M, again it contains maps which are in the form of f of A, where A is an element of R. हाँ तो वो तो डिफरेंट हो सकता है, मगर इस वाले केस में क्लासिफिकेशन थोड़ी इजी है. हाँ तो वो उसमें क्लासिफिकेशन इतनी आसान नहीं है. अगर आप क्लासिफाई करना चाह रहे हैं तो ये कुछ स्पेशल केसेस के लिए जिनके लिए क्लासिफिकेशन इजी है, कि अगर आपने R से R में जा रहे हैं या अगर R से किसी M में जा रहे हैं तो यू कैन क्लासिफाई R module homomorphism in this way. Okay. Okay, one thing, sorry, एक चीज मुझसे मैंने यहाँ पे लिख दी कि A is an element of M होगा, because initially जब यहाँ पे A जो आया था वो तो एलिमेंट M का आया था ना, because F is a map from R to M. तो यहाँ पे इनपुट जो A आया था, it is an element of M. So that's why यहाँ पे जो A होगा वो M में बिलोंग करता है. Okay. तो यानी कि आप थोड़ा सा इसको फर्स्ट वाले को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जितने रिंग्स के एलिमेंट्स होंगे उतने मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होंगे, इट सीम्स. ओके. एंड हियर जितने मॉड्यूल्स में एलिमेंट्स होंगे उतनी ही रिंग होमोमॉर्फिज्म्स होंगी, आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होंगी. सॉरी, सो जितने आर मॉड्यूल एम के एलिमेंट्स होंगे उतनी आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स होंगी, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ एम इज इंड्यूसिंग एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स from R to M, and every R module homomorphism is in the form of FA. Okay, so it seems कि मैपिंग, sorry, मैपिंग उसकी तरह नहीं, जब मैपिंग करते थे फ्रॉम अ रिंग टू अ फील्ड ऑफ एक्शन, तो इसमें ये है कि वो जो है ना उसका वो सबसेट नहीं है, बाकी सब मैपिंग तो उसी तरह हुई है. नहीं वो फील्ड, हाँ तो यहाँ पे भी R सबसेट तो नहीं है, M कुछ भी हो सकता है. M is just an R module. हल्के कर दो, लगे ये बोला भी तो लग रहा. इससे बड़ा सहारा होता है, आपको नहीं पता. ये फुल चल रहा होता है ना. मैं भी इतने एसी में बैठता नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपने कमरे का एसी चलाता भी नहीं हूँ.
मगर जब मैं सर्दी रोजे में बैठता हूँ ना तो मैं कहता हूँ फुल सर ये के चलते रहेगा। ओके, आपका सवाल अली दोबारा रिपीट करेंगे? मैं आपका सवाल समझा, आप रिपीट करें। और ये बिल्कुल इसी तरह की मैपिंग है ना जो हम करते थे फ्रॉम रिंग टू द फील्ड ऑफ फ्रैक्शन। वो तो रिंग होमोमॉर्फिज्म होती थी। रिंग होमोमॉर्फिज्म की तो प्रॉपर्टीज अलग होती है ना, बिकॉज उसके तो ऑपरेशंस वो तो इंटरनल प्रोडक्ट ऑपरेशन होता है। यहाँ पे तो जब मॉड्यूल अज्यूम कर रहे हैं तो इंटरनली जो एलिमेंट्स का अपना जो प्रोडक्ट है तो प्रेजेंट नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो। जैसे आपको पता है कि हर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं होती, हमने एग्जांपल्स करी हुए हैं। तो इन द सेम वे जो रिंग होमोमॉर्फिज्म रिंग्स में जो ऑपरेशन होता है वो इंटरनली ऑपरेशन होता है, प्रोडक्ट ऑपरेशन। सो हेयर ऑपरेशन so multiplication is the scalar multiplication from R to M. So I don't think so कि इसको आप से कुछ कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, आप कुछ मैप लीनियर मैथ वाले से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो क्लास ठीक है, लिए आपको क्लियर हुआ कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, या मैं शायद आपके पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। वहाँ पे भी हम मैप डिफाइन करवाते हैं, जाहिर सी बात है कि एक फील्ड से या एक इंटीग्रल डोमेन से उसकी फील्ड ऑफ फ्रैक्शन में मैप हम डिफाइन करवाते हैं, बट दैट मैप आखिरी बात समझ में आ गई। बस मैं यही बोल रहा था कि वो जो मैप हम डिफाइन करवाते हैं ना उधर वो भी बिल्कुल इसी तरह डिफाइन करा रहे होते हैं ना कि वो एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए ले लेते हैं और अच्छा 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 फिर उसके बाद वो तो ये इसमें इनको समटाइम्स हम एक्सटेंशन भी कहते हैं कि इफ वी नो द इमेज ऑफ वन देन वी कैन कंप्यूट द इमेज ऑफ एनी पॉइंट। तो जैसे लीनियरिटी को एक्सटेंड करते हैं, इसी तरह आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म इज आल्सो एन आर लीनियर मैप, so we can extend the image of one. So class, what we have seen in both cases that we are interested on all R module homomorphism from one module to another module. So now this leads to a definition of home. Home that, so let M and N be R modules. So actually the set, now we are interested in the set of all, a set of R module homomorphisms from M to N. और इस सेट को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ? इस सेट को मैं डिफाइन करता हूँ होम, इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म इंटरेस्टेड हूँ R मॉड्यूल्स में, home of R from M to N. So you can write this thing also in this form, that it contain all maps such that F from M to N is an R module. So it is a set of all maps which are set from R to N. Now class, what is the actually claim and what is the बल्कि आप proposition कह लें, that under set this set home, कि इसमें मैं पहले कुछ एडिशन डिफाइन करवाऊंगा, कोई सी भी एक एडिशन में डिफाइन कराऊंगा, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कराऊंगा, अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू R, this home is also an R module. ये मैं भी आपको बताऊंगा कि एडिशन कैसे डिफाइन करानी है, बट दिस होम इज आल्सो एन R module. So what is the big idea? That M और N तो मॉड्यूल्स हैं, but the set of all R module homomorphism from M to N with itself an R module. ये भी क्या बनाएगा? R module बनाएगा. इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आपने कभी फंक्शनल एनालिसिस में, कभी वेक्टर स्पेस में, कभी आपने फंक्शन स्पेसेस पढ़ी हो कि सारे फंक्शंस या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिला के भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर देते हैं, या ठीक है किसी ने कुछ फंक्शनल एनालिसिस वाला पढ़ी होगी कि फंक्शंस की स्पेसेस भी हर होती हैं। तो
but here what is the point that now M and N are modules, but the set of all R module homomorphism, it is also an R module. वो खुद भी itself क्या होता है, एक R module इनके बना रहा होता है. So पहले ये मैं इसको पहले तो मेरा इरादा है इसको मैं R module proof करूं, but R module proof करने से पहले कुछ examples home की देना चाहता हूं ताकि हम as a set पहले home को compute करने की कोशिश करें. Already हमने दो examples करी हुई हैं कि as a set we know कि as a set we know that what is a home, what is a home of, what is a set of R all module homomorphism from R to R. It contain elements which are in the form of f of a, where a is an element of R. Okay, and we also classified all R module homomorphism from R to F, and it contain all elements which are in the form of f of a, where a is an element of M. Okay, so हमने ये दो होम, so at least as a set, मैं भी मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा, but as a set मैंने ये दो होम कंप्यूट किए हैं. अच्छा, एक और भी हम लोगों ने होम कंप्यूट किया हुआ है, जिस एग्जांपल का मैं रेफरेंस में देता रहता हूँ, that home of C12 to C30, because both are abelian groups, so they can be considered as Z module homomorphisms. And in this case, all group homomorphisms are Z module homomorphisms. तो हमने कितनी Z module homomorphisms निकाली थी, कितने ग्रुप homomorphisms निकाले थे Z12 Z30 के दरमियान? ये मैंने आपको एग्जांपल कराया, 6 निकाले थे, 6 निकाले थे. उनमें से फिर दो रिंग homomorphism के लिए 4 निकाले थे, उनमें 6 निकाले थे. So actually we computed 6. So all group homomorphisms are Z module homomorphisms. So that's, और वो हमारे पास जो मुझे याद आ रहा है, वो 5 is 10 था, 25 था, 20 था, 15 भी था, और 6 भी था. ठीक है, एक शायद फाइव था, 25 था, 10 था ना, हाँ 10 हो गया, 20 हो गया, 25 5 हो गया, 15 हो गया. जीरो नहीं होगा, अब जीरो, अच्छा उसके जीरो में ले आ रहा होगा, जीरो ना, हाँ ठीक है, वो वन ऑर्डर का था ना, वन ऑर्डर का एलिमेंट जीरो हुआ. तो ये हमने ऑलरेडी होम कंप्यूट किए हुए ना, बट नाउ व्हाट इज माय क्लेम दैट एक्चुअली दे आर आल्सो R modules. Home is also an R module. So to define to see home as an R module, we need to define an addition on home, and then we need to define a scalar multiplication, and then we need to see that under addition in the scalar multiplication, this home is also an R module. But these are some examples, and in fact अगर आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं इसको R मॉड्यूल होम को प्रूफ कर सकता हूँ, तो अगेन आई कैन, जब आई कैन प्रूव दैट कोई R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म का आइसोमॉर्फिज्म होती है जब वो बाइजेक्टिव होती है, तो इसकी मुझे बाइजेक्शन या आइसोमॉर्फिज्म किसके साथ नजर आ रही होगी, इस होम की, बिकॉज आई कैन डिफाइन अ होमोमॉर्फिज्म फॉर एनी एलिमेंट ऑफ R. तो इस सेट की जो एज अ सेट R के साथ ही नजर आ रही होगी, और we will see later on, we will see that it will be isomorphic to R. और इसकी मुझे बाइजेक्शन किसके साथ नजर आ रही है, M. तो later on we will see that ये वाला जो होम होता है ये R का isomorphic होता है, और ये वाला फॉर्म एज एन M का isomorphic होता है, और आइसोमॉर्फिज्म वही हो जाती है that homomorphism plus bijection, it is an isomorphism. but पहले हमें proposition proof करना है. Okay, so but to prove the proposition, first we need to define addition. So define addition,
अब मैं अब लिख रहा हूँ, बाद में उसको बस प्लस ही लिखूंगा। अब यहाँ पे समझ प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होगा। नाउ एडिशन किस तरह डिफाइन करवा रहा हूँ कि दैट फॉर f and g in home, that is both f and g are R module homomorphism from M to N. So f plus g is also a map from M to N, and it is and the addition is defined pointwise. Define as f plus g x, it is equal to f of x plus g of x for all x in M. तो इसको पॉइंट वाइज एडिशन भी कहते हैं। दिस इज अ पॉइंट वाइज एडिशन कि f plus g का इमेज क्या होगा इन एवरी पॉइंट of M, image of f plus g is just equal to the image of f plus image of g. So now ये एडिशन तो मैंने डिफाइन करा दी, बट नाउ वी नीड टू शो दैट दिस एडिशन इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या है? नहीं रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे वेल डिफाइंड होने का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, या दिस एडिशन वेल डिफाइंड मैं क्लोज कह रहा हूँ, दिस एडिशन इज अ क्लोज ऑपरेशन। जब मैं क्लोजनेस की बात करता हूँ तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? दो एलिमेंट अगर मैं लूँ तो उनको ऐड कर तो होना चाहिए। तो अब इसका मतलब मुझे क्या शो करना पड़ेगा? अगर f और g अगर R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है तो एडिशन तो मैंने ऐसे डिफाइन कर, तो एक्चुअली to show that, so actually to show that this addition is well defined, we need to prove that f plus g भी क्या है? ये जो ऑपरेशन है वेल डिफाइंड ऑपरेशन है। इसका मतलब ये कि जो फंक्शंस को ऐड करूंगा, इफ वी ऐड, तो वो भी होमोमॉर्फिज्म्स होंगे। इसको ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तभी मैं शो कर देता हूँ कि अगर मैं x और y दो एलिमेंट लूँ, अगर मैं m के, तो f प्लस g में अगर मैं x प्लस y पुट करूँ, सो बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y, क्योंकि ये डेफिनेशन है ना पॉइंट वाइज एडिशन की, gx plus y, and since f is an R module homomorphism, so this is equal to f of x plus f of y plus g of x plus g of y. Now after rearranging, it is equal to f of x plus g of x and f of y plus g of y. So this is equal to f plus g x and f plus g y. So it shows that कि अगर मैंने अंडर f plus g x plus y का इमेज लिया, so it is equal to the image of x plus image of y. First property homomorphism की proof होगी ना कि that image of x plus y it is equal to image of x plus image of y. And for the second property, that for x in M and R in R, f plus g rx अगर apply करूँ, so it is equal to f of rx plus g of rx. So now f is an R module homomorphism, so this is r of f of x plus r of g of x, and this thing is equal to r into f of x plus g of x, and it is equal to r into
R into F plus Gx. So again, if we multiply, so if F plus G, or the image of Rx under F plus G, it is equal to R into image of X under F plus G. So ये second property apply होगा. So actually 1 and 2 implies that 1 and 2 implies that F plus G is an element of home. So यहाँ पे भी मैंने सिर्फ addition define करवाई है, उसको well defined show करा है. Now in the second step हमें scalar multiplication define कराना पड़ेगी. तो scalar multiplication कैसे define हो रही है, that for R and R, because again मुझे R मॉड्यूल proof करना है for R and R and X and M or F. So define scalar multiplication in this way. Or R dot F is defined as R dot F को कैसे define करा है कि R dot F again एक map होगा from M to N such that whenever I will plug an element X, okay, in M, तो ये क्या आंसर देगा, पहले इमेज लेगा इसका अंडर F, तो जैसे ही ये X का इमेज लेगा अंडर F, I will get an element in N, and then R का उसके साथ प्रोडक्ट ले लेगा. So in this way this map is defined. So this map is defined in this way. So how R dot F is defined, that R dot F is again a map from M to N. Again ये map अगर M to N है तो इसकी क्या property होना चाहिए, that if input is an element of M, then output should be an element of N. So here you can say that for input an element of M, तो इस मैप को, ये मैप कैसे डिफाइन किया, तो सबसे पहले उसने अंडर F इमेज ले लिया, अंडर F इमेज ले लिया X का, तो जैसे ही उसने अंडर F इमेज लिया X का, so here we got an element in N. So this is an element in N. Okay. और जैसे ही मैंने R का जब पूरे N के f of X के साथ प्रोडक्ट लिया, so again I got an element in N. So in this way this map is defined. So that R dot F is again a map from R dot F is again a map. If F is a map from M to N and R is an element of R, so R dot F is again a map from M to N, and it is defined in this way that whenever input X is an element of M in R dot F, then output it is just equal to f of X, R into f of X, which is again an element of M. So again we need to show that R dot F again scalar multiplication is a close operation. Okay, so up closeness के लिए again we need to show that it is an R module homomorphism. So for this purpose again, if you multiply
So for x, y in M, so अगर मैंने x plus y apply किया, so by definition it is r into f of x plus y. And since r is an R module homomorphism, so it is equal to r into f of x plus f of y. F is an R module homomorphism, so it is equal to r into f of x plus r into f of y. So it is equal to r dot f of x plus r dot f of y. So again, we started, we plug the sum of x and y in this map r dot f, and it is in the end, it will give me the sum of individual images. So it will give me the image of x under r dot f plus image of y under r dot f. वो जो पहली प्रॉपर्टी होती है ना, वो सेटिस्फाई हो रही है r dot f के लिए. Now this for the second property, for S is an element of R and X is an element of M. So अगर R dot F में, if I plug X of X, okay, so again by definition it is equal to R into f of sx. तो पहले f of sx का इमेज लूंगा under f and then multiply with R. So this is by definition. Now since f is an R module homomorphism, so it is equal to s into f of x. Since we are assuming that f is an R module homomorphism, now using the property, it could be written in this way. And then again, I can use a commutative property, because again, here I'm assuming that R is a commutative ring with unities. So it could be written in this way, and then it could be written in this way. And this is equal to s into r dot f of x. So again, what we proved that r dot f s of x. So अगर मैं s of x का image लिया under r dot f, so it is equal to the image of, it is equal to s time image of x under r dot f. जैसे हमारे पास मॉड्यूल की होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है, ये जो लीनियर प्रॉपर्टी होती है दैट हम स्केलर को बाहर निकाल लेते हैं. So in the same way we can take scalar out of the function. So again, these two things shows that ये कि अगर आप ये वाली चीज कर लें, इसको आप 2 कह लें and then इसको आप 1 कह लें, so 1 and 2 implies that this is an R module. 1 and 2 implies that this is an R module. That implies that R dot F is an element of home. अब तो अभी तक हमने सिर्फ ये काम किया है कि we just define 2 operations on the home set, 2 well-defined operations on the home set: scalar multiplication and addition. Now, what is the claim that under the scalar multiplication and addition? So now, what is the claim that this home of R Mn under the addition and scalar multiplication, which is defined above in home, is an R module. अच्छा, R मॉड्यूल के लिए जस्ट मैं कुछ चीज़ों इतना ज़्यादा हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है. ओके, एक चीज़ हमें पता है कि फंक्शंस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है फंक्शंस की एडिशन में. सो फॉर एनी फंक्शंस वी नो दैट f प्लस g प्लस h बराबर होता है f प्लस g, या पॉइंट वाइज जो एडिशन होती है
It is so point-wise addition. So point-wise addition between functions is an associative proposition. तो ये किसी भी फंक्शन के लिए होल्ड करती है. तो इन पर्टिकुलर जो होम में जो फंक्शंस होंगे उनके लिए भी होल्ड करेगी. So that's why this thing hold for all f, g and h in home. अब जो जीरो मैप होगा, जीरो मैप को ऐसे डिफाइन कराते हैं. जो जीरो मैप है इसको समटाइम्स हम जीरो ऑफ आर भी लिखते हैं. ये कैसा मैप होगा फ्रॉम m to n कि ये हर एक एलिमेंट को जीरो पे मैप करेगा. क्योंकि यहाँ पे जो ये तो मैप है जीरो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो ऑफ एन आ जाएगा क्योंकि एन इबिलियन ग्रुप है ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इस तरह से ही आ जाएगा और ऑल एक्स इन एन. सो दिस जीरो मैप एक्चुअली इज द additive identity. The zero map is the additive identity because आप किसी भी मैप को जब आप जीरो मैप से ऐड करेंगे तो अगेन आपको क्या ये मैप मिल जाएगा. ओके आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपने कोई एक्सपुट किया तो आंसर में आखिर में आपका एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपुट करेंगे तो जीरो में जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स है. तो अगेन वी नो दैट minus f of x, okay, that for f from m to n our module homomorphism that is f is an element of home of our mn. ये मैप हम कैसे डिफाइन करा सकते हैं कि इसके जैसे स्केलर मॉड्यूलेशन दैट माइनस एफ ऑफ m to n, ये ऐसे डिफाइन होगा दैट इफ इनपुट इज x देन आउटपुट क्या होगा कि फर्स्ट आई विल टेक अच्छी तरीके से that if input at x where x in an element of m, so output क्या पहले लूंगा, first I will take the image of f of x and then I will take its additive inverse. So minus f of s is defined in this way. So this minus, so one can check that this minus f, so this minus f is also an element of the home. जैसे हमने ऊपर वाले आर एफ को चेक किया था इसी हम माइनस एफ को भी चेक कर सकते हैं. एंड ऑल्सो वी कैन चेक दैट इफ वी टेक द एडिशन ऑफ एफ विथ माइनस एफ देन आई विल गेट द जीरो मैप आइडेंटिटी. सो इट्स मीन दैट माइनस एफ, this minus f is the additive inverse of f. And fourth one, that again we know that f plus g it is equal to g plus f. Commuted फी तो property hold करेगी. Now in the same way कुछ scalars की property, एक प्रॉपर्टी को जस्ट मैं शो कर देता हूँ, बाकी प्रॉपर्टीज आप लोग उसके लिए चेक कर सकते हैं.
सो लेट्स से स्केलर्स में अगर जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें कैसे आ सकती है दैट फॉर आर इन आर एंड एफ जी आर इन होम. सो मेरा टास्क क्या है दैट आर डॉट एफ प्लस जी इक्वल होना चाहिए आर डॉट एफ प्लस आर डॉट जी. So one can check it easily that if we तो अगर मैं यहाँ पे x पुट करूँ तो for because हर चीज r मॉड्यूल है ना from m to n. So for x and m, so this thing r dot f plus g is equal to by definition अब पहले f plus g एक्ट हो जाएगा x में and then in the end इसमें मैं r एक्ट करूँगा r इससे मल्टीप्लाई होगा. Now here I will use the definition of the point-wise addition. So equal to f of x plus g of x and this thing it is equal to r into f of x plus r into g of x and this thing is equal to r dot f of x plus r dot g of x. So again we proved that if in r dot f plus g it is equal to if we plug x, so it is equal to r dot f plus r dot gx. So this thing implies that r dot f plus g it is equal to r dot f plus, because for all our inputs they are equal, so that's why maps are equal. So in the same way, using the definition of the scalar multiplication and the point-wise addition, you can prove other properties like this. So other जो properties होती हैं that r plus s dot f equal आएगा r dot f plus s dot f. In the same way, rs into f it is equal to r dot s dot f and 1 dot f again it is equal to f. Okay, so these are other module properties which you can verify. So in the end we will see that this home actually काफी important module है जो हम बाद में भी इसको मुख्तलिफ जगहों पे यूज करेंगे. So that's why मैंने इसकी पूरी derivation कराई है. We just try to see that the set of all module homomorphism from m to n it is also an R module. So we can define addition, scalar multiplication, both and then under the addition scalar multiplication this is an R module. अब examples हमने already कुछ करी में so now for example if R it is equal to Z, so we know that home of Z from Z वही R dot R वाली example है. So it contain all maps which are inducing by integers and f of a is defined in this way. और बेटर तरीके से लिख देता हूँ सही that f of a is a Z to Z is an R module homomorphism and where f of a किस तरह से define होता है, अगर इनपुट x है तो आउटपुट क्या आ जाएगा ax आ जाएगा. ये ऐसी उसी की एग्जांपल है जो हमने वो वाली एग्जांपल करी थी अगर आपको याद हो कि होम ऑफ आर कॉम आर करी थी, ये वही वाली एग्जांपल है. इसमें आर को मैंने z के इक्वल लिया. इनफैक्ट बल्कि अब जो मेरा क्लेम है या जो मेरी एक्सरसाइज है वो यही है कि उस वक्त भी हमें नजर आ रहा था कि होम ऑफ आर फ्रॉम आर
ये किसके आइसोमॉर्फिक है? एज एन आर मॉड्यूल किसका आइसोमॉर्फिक है? आर के आइसोमॉर्फिक है। तो यहाँ पे क्या है? आर मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म। तो आर मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म मीन दैट आर मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये है, आर मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म मीन दैट आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव, आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्शन। सो अब मेरा जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो ये है that home of R to R, which is an R module, it is R module isomorphic to R. In fact, so for this purpose, अब मुझे अगर इन दोनों मैप्स को दोनों चीजों का अगर मुझे आइसोमॉर्फिक शो करना है, नहीं फैक्टरिंग नहीं, जैसे एक मैप डिफाइन कराऊंगा दोनों के दरमियान और उसका आइसोमॉर्फिज्म शो करूंगा। सो डिफाइन a map phi from home of R comma R to R in this way। एक इनके दरमियान एक मैप डिफाइन करें। अच्छा मैप क्या होगा? यहाँ पे मैप क्या है? F मैप किस टाइप का मैप है? विच इज एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। तो मैप मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? अगर इफ इनपुट phi is if input is an element from home which is itself an R module homomorphism from R to R, then output is the image of F at 1. Then output is the image of F at 1. So map this map phi is defined in this way. So अब मेरे claims क्या क्या होंगे? मेरे claims ये होंगे कि ये जो phi है, this phi is an R module homomorphism plus phi क्या है? Injective है। And third thing that phi is surjective या bijective, okay? Sorry, surjective. Phi is surjective, क्योंकि phi bijective है। तो अगर मैं ये तीनों चीजें शो कर दूं तो इसका मतलब ये जो R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। एंड देन बोथ मॉड्यूल्स वुड बी आइसोमॉर्फिक। ये मैप आप डिफाइन इस तरह से है, देखें जब F इज अ मैप फ्रॉम R to R, तो जैसे ही मैं F को 1 पे इवेल्युएट करूंगा, आई विल गेट एन एलिमेंट ऑफ R, and I have a motivation because we know that every R module homomorphism is in the form of F of A. So now first, for the first part, one can check that if I apply F plus G, so for Fg in home of R from M to N, अगर मैंने इसमें F plus G apply किया, so what I will get? I will get F plus G into 1, and it is equal to F of 1 plus G of 1, यानी कि I will evaluate F plus G at 1. तो अगर इनपुट क्या F plus G है, तो I will evaluate F plus G at 1, so it is equal to F of 1 plus G of 1, and F of 1 किसके बराबर है? phi of F के बराबर है, और ये किसके बराबर है? phi of G के बराबर। And what is the second property? नहीं, अभी तो मुझे R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म में प्रूफ करना है ना। अभी तो मुझे ये मैं इसी वाले पॉइंट पे ना कि आई नीड टू स्केलर वाली प्रॉपर्टी, दैट फॉर F in home of R from M to N and R from R from the ring, phi को अगर मैंने R dot F में अप्लाई किया, because this R dot F is a scalar multiplication, so actually I will get the evaluation of this map at 1, and by definition it is equal to R of F of 1,
ये पहले f of 1 पे evaluate करूँगा, and what is r of f of 1? It is equal to phi of f. So again, what I proved that that if we multiply, so if we apply phi on r dot f, so it is equal to r times phi of f. So this thing shows that phi is an R module homomorphism. Now we need to show that phi is an injective map. Phi is an injective map. अच्छा, इंजेक्टिव मैप प्रूफ करने के लिए जो यूसी जो प्रोसेस होता है, that we will show that कर्नल ऑफ दिस मैप, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इस मैप का कर्नल क्या होगा. जब हमें इंजेक्टिव, ये हमें रिंग के लिए पता है, ग्रुप के लिए पता है कि दैट इफ यू वांट टू प्रूव दैट समथिंग इज इंजेक्टिव, सो यू नीड टू शो दैट उसका जो कर्नल है उसमें सिर्फ 0 एलिमेंट शामिल है. तो ये मॉड्यूल के लिए भी ये चीज होल्ड करती है. सो इफ f is an element of the kernel of phi, it implies that phi of f क्या आंसर होगा, phi of f आंसर 0 देगा. अच्छा, ये जो 0 जो यहाँ पे मौजूद है, बिकॉज 5 इज अ मैप फ्रॉम r to r, ये जो 0 मैप, ये 0 होगा, ये जस्ट रिंग का 0 एलिमेंट होगा, ये रिंग का 0 एलिमेंट होगा, 0 element of the ring R. So it is a 0 element of the ring R. Now one can see that इसका मतलब f of 1 क्या आंसर देगा, 0 आंसर देगा. तो जैसे ही f of 1 0 आंसर देगा, तो इसका मतलब ये कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट पुट करूं फॉर ऑल x in R, f of x आंसर क्या देगा होगा, अगर 1 का आंसर 0 तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा. So it's mean that this f is the 0 map. अब यहाँ पे मैं इसको 0 मैप लिख लूँ, it is the 0 map, क्योंकि अगर वो सब में आंसर 0 दे रहे हैं तो it is the 0 map. So we took an element from the kernel and we put that map is the 0 map. It's mean that kernel of phi only contains the 0 map. Okay, this shows that we show that this phi is injective. अच्छा, सब्जेक्टिव के लिए हम वही चीज यूज करेंगे, that now we need to show that this phi from home of R to R this phi from R to R is subjective. अच्छा, सब्जेक्टिव के लिए हम इसी फैक्ट को यूज करेंगे जो हमने पहले प्रूफ किया था, that here we know that every R module homomorphism is in this form. तो बहुत ज़्यादा easy है that whenever I will take an element A from R, so we know that there exists something always here, कि यहाँ पे जब से मैं f of A लूँगा और f of A का इमेज फिर क्या आएगा, आप बताएं कि what is इसका इमेज क्या है. नहीं, देखें, जब हमारे पास phi कैसे डिफाइन है, ये phi कैसे डिफाइन है, that इनपुट अगर f होता है तो आउटपुट क्या आता है, इमेज ऑफ एट 1. तो अगर इनपुट अगर a है तो इनपुट अगर f ऑफ a है तो आउटपुट क्या आएगा, इमेज ऑफ f ऑफ a एट 1. और इसका इमेज क्या होगा, f ऑफ a का 1 पे इमेज क्या होगा, a1 which is equal to a. So it's mean that for any element a in R, there exists f of a in the home. f of a in the home के जब मैंने उसका इमेज लिया तो किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया. It's mean that every element has a pre-image. हर एक एलिमेंट का pre-image क्या होगा, f of a के इक्वल होगा. And we know that f of a is an R module homomorphism. So every element has a pre-image, which shows that f is a surjective map.
So now 1, 2, and 3 implies that. So 1, 2, and 3 implies that phi is an R module isomorphism, that is home of R, comma R is R module isomorphic to R. So class in the same way, next exercise जो हमने ये आप ये प्रूफ कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है कि home of R to M is isomorphic to M as an R module. So again यहाँ पे जो मैप डिफाइन होगा वो ऐसी मैप डिफाइन होगा that phi is a map that for F is an element from the home from R to M. That is F is an R module homomorphism from R to M. Phi of F कैसे डिफाइन होगा? Again phi of F क्या होगा? Evaluation of F at 1. So in the same way you can prove that this map is an R module isomorphism. तो मैप यही रहेगा कि अब now we will evaluate at 1. So जैसे हमने ऊपर वाला प्रूफ किए, in the same way you can prove that home of Rm is isomorphic to M. लास्ट चीज जो बता रहा हूँ उसको से हमें डिड्यूस करने का प्रूफ, इसको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे. That what do you think? ये चीज किसके आइसोमॉर्फिक होगी? क्या? LCM. पहले हमने क्या प्रूफ किया था? पहले हमने प्रूफ ये किया था Z12 C30 में कोई 6 एलिमेंट्स आ रहे थे. तो अगर कोई ग्रुप में 6 एलिमेंट्स हो और वो ग्रुप एबेलियन भी हो, तो किसका आइसोमॉर्फिक होगा? Z6 के ना, या आइसोमॉर्फिक होगा Z6 के. तो अब यहाँ से आप क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि 6, 12 और 30 का क्या है? GCD है. ये चीज हम देखेंगे कि होम ऑफ Z एंड ZM आइसोमॉर्फिक है Z of GCD. इनके एक्चुअली इसको सब ऐसे लिखते हैं, Z of D लिखते हैं, where D is the GCD of M and N. कि इनका ये होम इसके इक्वल होता है. ओके, थैंक यू क्लास. हेलो सर. जी जी सर तो फिर ये जो आपने भी ये आखिरी चीज ऊपर करें तो रखो. नहीं, ये जो आपने भी होमवर्क दिया था ना कि होम ऑफ R from M to N, ये वैसे ही प्रूफ हो जाएगा जैसे ऊपर वाले किया ना. अच्छा ये R to M है. सही है. मैं थोड़ा गलत लिख लिया था सर. आप ये जो आपने जो क्लास में शुरू में कराया था आप उस पर ले जा सकते हैं. मुझे बस वो कॉपी करना है. रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर दें. अच्छा ओके, 1 मिनट.